Good morning dear students. Welcome to today's class. So our today's topic is Hunds rule of maximum multiplicity. Now what is this Hunds rule of maximum multiplicity or what is this maximum multiplicity? Now in our previous class we have studied about the arrangement of electrons from lower level to higher level. In our previous class we have studied about above principle, and that above principle says that the arrangement of electrons from lower orbital or lower energy level and then it goes to the higher energy level. It means that electron filled first in a lower state, then at that time it gets completely filled, then next electron goes towards the next excited state with the increasing energy level. But this can happen only when one electron is present. But when there are number of electrons, you know the periodic table. हम लोगों को periodic table पता है. So what happen in that periodic table? The electron different atoms are there. That is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon and so on. तो उस एटम में क्या होता है, जैसे हम लोग उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं. हाइड्रोजन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 1, helium is having atomic number 2, lithium is having 3, beryllium 4, boron 5, carbon 6 and so on. So in this way, while counting that atomic number, here what happen, one electron get added towards the next atom. मतलब यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अलग ऐड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है वहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरा हीलियम आ गया उस पे अगेन 1+1 हो गया इलेक्ट्रॉन, उसके एटॉमिक नंबर 2, उसके बाद बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर 3. इट मींस दैट one इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड इन दैट अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो व्हेन वी आर हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक से दो से ज्यादा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर उसकी अरेंजमेंट हम लोगों को करनी है, so we cannot arrange that electrons in the way of above principle. तो उस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए एक प्रॉब्लम अराइज हुआ. So that problem was solved by the scientist Hunt. So he again introduced one principle that is known as, or introduced one rule that is known as Hunt's rule of maximum multiplicity. इसका नाम है Hunt's rule of maximum multiplicity. So इसका स्टेटमेंट क्या है? So in the Hunt's rule of maximum multiplicity, the statement is the electrons are distributed among the orbitals of a subshell. जो हम लोग सबशेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, so that electrons are distributed among the orbitals of a subshell in such a manner so as to give the maximum number of unpaired electron having parallel spin. इसका मतलब ये है, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल में अरेंजमेंट करते हैं, सपोज हियर वी आर, दिस इज द p orbital. Okay, so you know that the distribution of p orbital is px, py, pz. So what this principle says that, or rule says that, the electrons are distributed among the orbital in such a manner so as to give the maximum number of unpaired electron. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते समय हम लोगों को ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि उसमें सबसे पहले क्या आने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन. पैरेलल स्पिन इज, दिस इज द पैरेलल स्पिन. एक ही इसमें जब रहेंगे ये हो गए पैरेलल स्पिन. दिस इज द एंटी पैरेलल स्पिन. दिस इज द movement of electron in upward or clockwise direction. This is the movement of electron in anti-clockwise direction. इसको हम लोगों ने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर में. When clockwise rotation of electron is there, then it is denoted by upward arrow. When anti-clockwise rotation of electron is there, it is denoted by downward arrow. तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जब करना है, so at that time the electrons are arranged among the orbital in such a manner so as to give the maximum number of unpaired electron.
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस इज अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब यह है यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इट इज हैविंग पैरेलल स्पिन. पैरेलल स्पिन होनी चाहिए. सो these electrons are distributed among the orbitals of a subshell. This is the subshell px, py, pz in such a manner so as to give the maximum number of unpaired electron. यहाँ पे हम लोगों को maximum number of unpaired electron पहले मिलने चाहिए. जब इसका क्राइटेरिया फुल होता है और इसके बाद भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, then at that time you should do the pairing here. Okay. The capacity of p orbital is to accommodate at the most 6 electron. p orbital की कैपेसिटी कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की है. तो अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम लोगों को क्या करना है? पहले ये तीनों को फिल करना है पैरेलल स्पिन में. ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन. इसके बाद बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखोगे. So this is the pairing takes place. Okay. So this is the principle or rule of the Hunds rule of maximum multiplicity. Now again in other words we can say that in degenerate orbitals the electron filled first singly and then pairing takes place. It means that अगर हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जब करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में और किसी भी सबशेल में, तो पहले सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन को आप पुटअप करेंगे वहां पे. सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन फील्ड सिंगली. और उसके बाद आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन बचता है देन द पेयरिंग टेक्स प्लेस. देन यू कैन डू द पेयरिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. ओके. सो दिस कैन बी अगेन एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वन एग्जांपल. This is the example of nitrogen. We are taking one example, that is the example of nitrogen. So first you know the atomic number of nitrogen is 7. Now according to the above principle we are going to arrange this atomic number in the different orbitals by that is known as electronic configuration. So what is the electronic configuration of this nitrogen? 1s2, 2s2, 2p3. Now this 1s2 it is completely filled. It is having s orbital is always having criteria to fulfill 2 electron at the most. यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये completely filled हो गया. Again 2s2 ये भी completely filled हो गया. Now this is 2p3. p orbital के पास at the most कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन? 6 और यहाँ पे है 3. So this is half filled. Now this half filled p orbital we can use the arrangement of this 3 electrons in 2 different ways. यहाँ पे 2 different ways में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग किया है. px, py, pz. Again this is px, py and pz. So what happen in this case? The electrons are arranged in these different subshells in 2 ways. यहाँ पे 3 electrons का distribution कैसा है? 1, 2 and 3. इसको खाली छोड़ दिया. Here again 3 electrons का distribution कैसा है? 1, 1, 1. Here the electrons are filled singly in these 3 subshells or 3 orbitals. Okay. Now this is one formula. Hunds introduced the formula for seeing the maximum multiplicity in that orbital. किसी भी ऑर्बिटल में मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कैसे रहेगी उसको काउंट और कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, दैट इज 2s plus 1. नाउ व्हाट इज दिस s? s means s is nothing but the spin quantum number. s is the spin quantum number. Now as per this spin quantum number, here 2 configurations are there. First configuration of this one, second configuration of this. This is the second configuration. Now as here half ये value दी है. So in case of spin quantum number when clockwise rotation is there,
जहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम लोग प्लस हाफ से डिनोट करते हैं, एंड अगेन जहां पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है उसको हम लोग माइनस हाफ से डिनोट करते हैं. सो बाय यूजिंग दिस वैल्यू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, we are putting this value of minus half and plus half of spin quantum number in this formula. So see here, in first configuration S is equal to, here the three possibilities are there. This one is empty, so here upward direction arrow is there, therefore we have written plus half. Again this downward arrow is there, therefore we have written minus half. And again this is the plus half. Now the total is half, 1 by 2. And in the second configuration, here S is equal to, here these three are the upward direction, movement is clockwise and rotation is upward, therefore these three are denoted by plus half and plus half. Therefore the answer is 3 by 2. Now according to this formula, m is equal to twice s plus 1, and according to this filling of electron, what happened? This configuration is correct one, because here as per this rule of maximum multiplicity, the electron first filled singly. सारे ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल फील्ड करना है, अगर बचता है तो उसको फिर बाद में पेयरिंग कर सकते हैं. यहाँ पे क्या किया है, पहले ही इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर दिया और pz ऑर्बिटल को एम्प्टी रखा है, खाली रखा है. सो वी कैन नॉट डू दिस एज पर दिस रूल. सो वी हैव टू फिल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इन सच अ मैनर so as to give the maximum number of unpaired electron having parallel spin, or in degenerate orbital the electron filled first singly and then pairing takes place. Therefore this configuration is correct one as per the rule of maximum multiplicity, and as per this formula m is equal to twice s plus 1. We will show here two configurations are there, and as per the value of s, that is plus half and minus half, we will get these two possibilities or two calculations are there. So result of second configuration is higher, it will give maximum multiplicity. Therefore this Hunds rule of maximum multiplicity will shows that the electrons are distributed among the orbitals in such a manner so as to give the maximum number of unpaired electron having parallel spin. इसको पहले हम लोगों को पहले फिल करना है, किसी को भी एम्प्टी रखना नहीं है. ओके, आफ्टर दैट इफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज देयर, देन यू कैन पेयर इट इन दैट ऑर्बिटल. So this is all about the Hunds rule of maximum multiplicity. Okay dear students, thank you.